Assalamu alaikum. Before your class, I was looking at how many papers we have did and we have done already, and what are the videos that we have seen before or uploaded. So these are the number of videos, excluding this one. So I decided to do this today, the winter paper. So let's move on to this. So doing winter paper 2023, paper 2, 1 hour 45 minutes. You got to answer all questions. Black pen, blue pens are allowed. HB pencil is allowed for the diagrams and the graphs. Never forget to write your name, center number, candidate number. Otherwise, there's going to be a big problem. In my mock exam, I've seen that many students forgot to write their name. It was real difficulty to find out whose copy we were checking. So never forget that. Write your answer in the space provided. So stencil space is given where you write your answer. Sometimes it does happen that you do something wrong. Don't make it too messy. You can just draw the line if you want to cut something. So you can do that. You're allowed to do that, but draw a single line. And then you can continue. Plus, never use erasable pen or correction fluid. Do not write anything on the barcode because that can be used to identify your copy. Calculators must not be used. Paper marks are 75. Your each question marks are given in square brackets. No marks will be awarded for using the brand name. Like for example, you're writing Windows, Microsoft Word, PowerPoint. So no such marks will be awarded. Or you're giving the brand name for the hardware. Like for example, you're saying that Dell, a laptop, or Kingston USB. So no mark for the brand names. Always look at the number of pages sheets. Check that you have those in the sheets there or not. Plus, sometimes it does happen that you need some extra sheets, so you can always demand for it. Extra sheets are provided in my Cambridge checking. I've seen that students do use extra sheets as well, so you can always demand for extra sheets. So otherwise, there are two blank pages given in the end of the paper where you can, do your rough work, and you can always do your rough work with a pencil or pen, your choice. Question number one, what do you think what it is? Take one of the box to complete the sentence. Verification is used to make sure that the value entered. Is correct. See. Verification is used to make sure that the value entered has not changed during the input. For Oh, example, sorry, वो validation होता है सर. system prompts you to enter the password, old password, and then the system prompts you to enter the new password. System prompts you to enter or verify password. So when you're using verify password, meaning what? So you re-enter that password and system would automatically check whether you have entered the correct password or not. So examiner is talking about this, that both the passwords should match, should not change during input. Moving to the next question, a type of validation is a length check. The length check is a validation, like we say that our name should have 20 letters, 15 letters. Another type of validation check is used to make sure that the date entered is in the DD, YYY style. So examiner wanted date to be entered in this form, DDMMYYY. So DD means day, MM means month, YYY means year. State the type of the validation check used. So there were many validation check that we have studied. I've taught you no duplication, size check, lookup check, format check, presence check, and lookup check. So what do you think? Which one you're gonna write that there? Format. Format Format. is the right answer. Format check is the right answer. And then it says give one example of normal test data and one example of abnormal test data. So normal test data and one example of abnormal test data you should use to make sure that the check in a part A is working properly. And what if you're writing down the date in the same style? Remember that that's the style of the date. You should keep in mind, suggest one normal data
and one abnormal data. 24/6/2007. So you were saying 24 6. Should I write 6 or 06? 06 06 2007. 2007. And what is that? Normal, abnormal? To check if Huh? To check that the date the is data is working correctly. to check that the date entered date is accepted by the system. Right. And what can be incorrect example? Yes, Miss Urva. 2007 bracket 24 bracket 7 bracket 6. उल्टा करना सर. Or should I write minus 2031 like that? Or anything. For example, month 13. That's not possible. Anything beyond that. Or what if you write down the day exceeding the limit 32? 32 can never be a proper day. So what is the purpose in that case? The purpose is To check if it is stops incorrect data. rejected by the system. Hmm. Okay. जी. So describe how a length check could be used with the date entered. What can be the length check if you're writing in this format, in this style? Yes, Urva. How much is the length of this or this? सर ये स्लैश काउंट होता है लेंथ में. बिल्कुल काउंट होता है. 1 या minute. Urva So क्या you नहीं है? please. She gone over. Yeah, she is there. Just count the number of And now I'm characters. here. So you. 1, My 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So total size is 10. The date, describe our length check. The date should not exceed to 10 characters. सर एग्जांपल मिल सकता है लेंथ चेक निकाल के लगा के. क्या चीज? लेंथ चेक लगा के एग्जांपल भी दे सकते हैं. Length check up to 10, up to 10. सही है, ये भी कर सकते हो. But so this is Yeah. for 2 marks. If एग्जांपल लगा देंगे. below 10, above 10, below 10 or above 10 should be rejected. Yes, what are you saying, Jari? सर मैं इसमें दूसरे मार्क्स के लिए लेंथ चेक की एग्जांपल लगा सकते हैं कि लेंथ इसका ब्रैकेट लगा के जो करते हैं लगा सकते हैं दूसरे मार्क्स के लिए. कैसे लगाओगे? बोलो 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 बोलो. क्या लेंथ ब्रैकेट मतलब नॉर्मल Length, bracket, डेट कॉमा 10 date, comma 10 10. लगा सकते हैं इसे. वैसे तो ये एग्जाम्पल ही गलत है. सही है, ना लगाओ तो ज्यादा बेहतर है. अंग्रेजी में लिखो, क्योंकि लेंथ का जो काम होता है ना, वो लेंथ मालूम करना होता है. जैसे आप लिखे हैं लेंथ को इस तरह यूज कर सकते हैं. आप लिखे हैं पाकिस्तान 10 का रिजल्ट आता है 8. ये काउंट करता है कितने कैरेक्टर्स हैं इन टोटल. तो इस तरह ना दो एग्जाम्पल, ऐसे दे दो एग्जाम्पल, लिख कर बता दो. Yep. 2 पॉइंट है ना, 2 मार्क का सवाल था, तो दोनों का एक एक नंबर मिल जाएगा आपको. ये 10 होगा तो ठीक है, 10 से कम ज्यादा रिजेक्ट हो जाएगा. चलो जी. The first one's a procedure. How do you know it's a procedure? कॉल कमांड. Very good. It's कॉल की वजह से पता लग रहा है कि दूसरा ये एवरेज प्रोसीजर है. फाइंडिंग एन एवरेज. दूसरा है फाइंडिंग एन एवरेज. यू आर राइट देयर, क्योंकि टोटल करके डिवाइड हो रहा है. ठीक है, काउंटिंग इसमें +1 हो रहा है तो काउंटिंग है. लूप लिखने से लूप नहीं होता, ये तो एक वेरिएबल है. ठीक है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट. ये कंडीशन. using
परफेक्ट हो गया, वेल डन. A one-dimensional array called temperatures. So imagine that you have an array. Imagine that you have array there, and now what? Has 25 elements, so it should begin from 1 and go up till 25. Beginning at index number 1. Okay, fine, we started that from index 1. Holds the value that range from minus 20 to 100. So all the number has to be in this range, minus 20 to 100. So all 25 values should be in that range. Write a pseudocode algorithm using a single loop to find the lowest value in this array and output the result only once. You don't need to declare or populate this array. Imagine that array has already been pre-created, has been declared, all the data has been entered. You just have to write down the program to find the lowest value. Bubble sorting. Hmm. So lowest value के लिए you have to have what? A variable. You can say minimum, you can say lowest. Choice is yours. You have to like a high value, like low value equals to Just 10,000 or something. 1000 started with a very large number or any number beyond the range. So the last number in the range is 100. So we can start it with 101. And then examiner says that you use one single loop. So the total size of the array starting from 1. So we can say for count, or you can say for I, 1 to arrow 20. assignment 1 to 20. what? 1 to 25. And you can use a variable, any variable that you want count, and then do what? If num greater than min. If num If num num, greater than min. what is num? वही array का जो input है array No, की जो no, no, number no, 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 no. If temperature bracket count Perfect. is greater than, is lesser If than temperature bracket count count greater is than min. lesser than minimum. lesser than, greater than नहीं है तो उसमें देखो अगर जो ओ जी पहली नहीं सही मैं पहली sorry, वैल्यू अगर पड़ी है सपोज 98, जी पहली वैल्यू 98 है, 98 छोटा है किससे? मिनिमम से. उससे मिनिमम कितना है? 101. 10 तो इसमें तो से फिर वो दोनों हो में जाएगा छोटा min कौन सा है? इसमें दोनों में 98 स्मॉलर क्या है? min 98 छोटा है, तो 98 चले जाना चाहिए, उसके 98 अपडेट होना चाहिए. देन व्हाट? temp count में temp वो आ जाएगा min टेम्प क्यों Minimum होगा? equals to temperature count. डायरेक्ट मिनिमम लिखो, सीधा अपडेट करो मिनिमम में. मिनिमम चेंज हो जाना चाहिए. अब मिनिमम नंबर ये हो temp जाएगा count पहले वाला, temp टेम्परेचर count काउंट, ये हो जाएगा. और उसके बाद now what? and And if and if then output होगा और खत्म. then you should say output output min lowest temperature is min. Comma minimum. Okay, perfect. There you go. सर पहले नेक्स्ट काउंट नहीं होगा? नेक्स्ट भी तो होगा. हाउ डिड वी फॉरगेट दैट? अब नेक्स्ट कहाँ लगाऊं? आउटपुट के बाद या आउटपुट से पहले? output से पहले वेरी गुड. नेक्स्ट काउंट भी होगा. एक और चीज का ध्यान रखना है, वेरिएबल के एक जैसे यूज करने. सेम मिनिमम को कैपिटल में लिया था, अगर मिनिमम कैपिटल में लिया था कैपिटल यूज करो, वरना वेरिएबल जो भी है फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज करो, बाकी स्मॉलर करो. से चलो, ऑल गुड. जी अब इसमें अगर आप गौर करें तो जो कीवर्ड है वो आपको कैपिटल में नजर आ रहे हैं, जैसे फॉर, और एक गलती यहाँ पर भी हो गई है.
कीवर्ड को कैपिटल, इससे मार्क्स तो नहीं कटते हैं, बट लुक्स गुड। मार्क्स नहीं कटते हैं इससे, बट लुक्स गुड। कीवर्ड कैपिटल में है, इफ कीवर्ड है, एंड इफ कीवर्ड है, देन कीवर्ड है, उसके बाद नेक्स्ट एक कीवर्ड है, फिर आउटपुट एक कीवर्ड है। सर मैं इन वाले सवालों में कमेंट्स नहीं लिखने होते ना, इन वालों में जो सिर्फ 14 वाले में लिखते हैं ना, कमेंट्स किसमें? कमेंट से लिखते हैं, सूडो कोड में से 14 मार्क्स वाले में लिखते हैं ना। यार वो आपकी मर्जी है, कमेंट्स आप जहां भी लिखें, लेकिन जब भी आप कमेंट लिखेंगे तो डबल स्लैश लगाना। जी भैया जी। कमेंट के लिए डबल स्लैश लगाना भैया। आगे चलें। एरर आइडेंटिफाई करना है। अब आप लोग ऐसा करें, थोड़ी देर के लिए जरा वर्किंग करें अपनी खामोशी से, और जब वर्किंग कर लें तो फिर मुझे बताएं किसने क्या सोचा। सर पहले वाला बूलियन नहीं होगा। पहले जरा इसको ड्रॉ तो करके देखें क्या इंटेंशन क्या एग्जाम में। कहता है 50 सिटीज हैं जी एंड देयर कंट्री, 50 सिटीज एंड देयर कंट्रीज है, तो कुछ इस तरह की एरे की बात कर रहा है, क्योंकि 2D एरे बोल रहे हैं। 2D एरे इस तरह की बनेगी, एक सीडीज पर एक इसमें कंट्री 2 पर। कॉलम होंगे, जिसमें 1 से लेके 50 तक की रोज होंगी। अब आप गलतियां पकड़ लें जी। पहले वाले में बूलियन नहीं होगा, पहले वाले में बूलियन नहीं होगा तो बेटा क्या होगा? वेरिएबल। वेरिएबल भी नहीं होगा। यहाँ तो टाइप आती है इंटीजर, ओह स्ट्रिंग, सॉरी। बूलियन, इंट, रियल। एरर बताओगे तो एरर आपने बताया कि क्या एरर है, तो आपने बताया फाउंड एरर इज बूलियन on line number 1 की करेक्शन क्या बता रहे हो आप? स्ट्रिंग होना चाहिए सर। And why do you think that? Why do you think string होना चाहिए? She said string होना चाहिए. She is right. किसी से ही पूछ लेते हैं उर्वा से, why she has said that string होना चाहिए। जी उर्वा। Sir, they're asking for the cities, the names of the cities. Cities and Question the में countries. Cities and the countries. So cities और countries होते ही जो है वो अल्फाबेटिकल फॉर्म में होंगे। सो बिल्कुल इसकी करेक्शन आप बताएंगे, शुड बी स्ट्रिंग। और सर लाइन 7 पर गलती है। लाइन 7 पे यू आर सेइंग एक गलती है, एंड व्हाट इज दैट? The 2 should be the 1. लाइन जी 7 पे गलती है, इसको 1 होना चाहिए। और इसकी एरर इंडिकेशन आप देंगे। पहले तो आप बताओ एरर फिर है 9 में किधर। भी है। लाइन नंबर 7 पे प्रॉब्लम है, और क्या प्रॉब्लम है? इनपुट सिटी। उस लाइन को यहाँ कॉपी कर दो, मेंशन कर दो कि सिटी काउंट कॉमा पूरा लिखो, सिटी ब्रैकेट काउंट कॉमा। कॉमा 2 था। ये एरर है, इसको फिक्स सर करना है आपने। 9 में भी आ रही है। 1 मिनट बेटा, इसको फिक्स नहीं बल्कि करना है, नहीं, सही कह रहा हूँ। इसको फिक्स लाइन करना। 9 में गलती है और वो कंट्री होना चाहिए सिटी के बजाय। लाइन नंबर 9 में Yes, it should be country instead of city. नॉट रियली, नॉट रियली। क्यों नहीं सर लाइन होगा? नंबर 5 देखो में एरे भी का है, तो नाम, इफ की एक हैंग जगह ऑन हैंग रिपीट ऑन हैंग होगा। ऑन बेटा, एक सेकंड एक सेकंड। एरे का नाम है सिटी, इसमें कॉलम के तो नाम होते ही नहीं है, कॉलम के तो नंबर होते हैं 1 and 2, तो 2 वी डिसाइडेड इज टू बी यूज फॉर कंट्री, तो ये तो एरर नहीं है इसमें। सर लाइन 11 में वो आएगा, एरो आएगा। लाइन 11 में आप कहते हैं इक्वल्स टू 50 अगर किया तो इसका मतलब है ये 1 से चलेगा, और जब ये 49th कंट्री इंटर लेगा 49, तो ये +1 करेगा। अभी 49 टाइम लूप चला है, ये +1 करेगा, इसको 50 मिलेगा, बाहर आ जाएगा, 50th ठीक टाइम है चलेगा ही नहीं है। ठीक है, यू आर उसमें हो राइट। जाएगा। तो आप इसको कर रहे हैं मोर देन 50। जैसे ये मोर देन 50 हो तो एक्चुअली यू पिक्ड 51 भी अप। कर सकते हैं इसको, इज इक्वल टू हाँ, अनटिल, काउंट इज ग्रेटर देन 50 अनटिल पहले एरर बताओ, एरर क्या? अनटिल काउंट जो उसने लिखा था, वो इज लिखा इक्वल्स टू था 50। इक्वल्स टू 50।
लाइन नंबर 11 पे पूरा मेंशन करो ठीक से। और करेक्शन जैरी ने एडवाइस किया है कि होना चाहिए अंटिल द काउंट ग्रेटर देन 50। ग्रेटर देन 50। इसको पूरा ही लिख लें तो बेहतर है। अंटिल पूरा लिखें इस लाइन को, ऊपर सही वाली लाइन को भी पूरा ही लिखें, वरना पता लगा एग्जामिनर समझे कि यार आप इतना ही एडवाइस कर रहे हैं। इनपुट को भी लिखो पूरा साथ, सही। और इसके अंदर भी पूरा ही लिख दो तो बेहतर है, पूरे में तो टाइम लग जाएगा। तो इसमें खैर, टाइप ऑफ बूलियन लिख सकते हैं डायरेक्ट सिर्फ। क्या टाइप वैसे पता नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, फिर भी पूरा लिख दो, जगह तो है यार। क्या था? सिटी। सिटी एयर। इसको वैसे एग्जामिनर को यहाँ कॉलन लगाना चाहिए था, नहीं लगाया तो हम भी नहीं लगाते। खैर, एक और एरर है इसमें, एक बड़ा आसान सा एरर है जो आप लोग स्किप जी कर सर, गए हो। एंड इफ नहीं लगाया उसमें। 12, एंड इफ नहीं लगाया। एंड इफ की जरूरत तो जब पड़ती है जब इफ होता है, या इफ की जी जरूरत है यहाँ पे? नहीं। करेंगे। अंटिल है तो इसका रिपीट कहाँ है बेटा? यहाँ पर आना चाहिए था, ये इफ गलत है, यहाँ पे रिपीट और आना आएगा। चाहिए। नहीं। रिपीट आएगा बेटा, हाँ अंटिल लगा रिपीट, हुआ है सॉरी, ना। रिपीट रिपीट जी जी। Which line was that? Line लाइन number 5। 5। लाइन नंबर 5 इफ को लाइन नंबर 5 हो जाना चाहिए रिपीट। एक और एरर भी है इसमें, अगर आप पिक कर सके तो। is in line 12. यस, व्हाट इज दैट? Should it be 1 to 50 instead of 1 to वेरी गुड, 1 to 50 होना चाहिए इसको। अब हमें तो चार आइडेंटिफाई करने थे, देयर वर मोर एरर्स, तो आप इसमें ये बता सकते हैं आउटपुट 1 to 50। आई होप यू गॉट दैट। आगे चले। जी सर। ओके, डिस्क्राइब द चेंजेस यू शुड मेक to the corrected algorithm to allow the name of a country to be input and to display only the stored cities from that country. Do not need to rewrite the algorithm. आपको algorithm को rewrite नहीं करना है, आ, बस ये बताना है किस तरह से सर्चिंग होगी। सवाल समझ आया आपको? जी सर, क्या? कंट्रीज को सिटीज के साथ लिखना है और सिटीज को उनकी कंट्रीज के साथ लिखना है। सिटीज को उनकी, मतलब जो सिटी की रो है जिसमें मतलब जो कंट्री है उसी अगले कॉलम में वो होना चाहिए सिटी। right? So look what the examiner says here. Moving to question number 4, part B. I'm not typing the whole thing there because there are multiple steps. Says add an input and prompt the user to for the country to be searched. Searching का है ये. That's what I said. इसमें country ढूंढना है, कौन सी country है। Suppose आपने एंटर कर दिया पाकिस्तान। Between line number 11 and 12, line number 11 and 12 यहाँ पर ऐड करने की बात कर रहे हैं। प्रोग्राम लाइंस यहाँ पर ऐड होंगी। पहले तो सारा डेटा एंटर कर लिया, एरे फिल हो गया। सर्चिंग करना है तो यहाँ बताना पड़ेगा सर्चिंग के लिए। यूजिंग अ न्यू वेरिएबल फॉर द इनपुट, एक नया वेरिएबल लें। इफ कमांड से चेक करें कि कंट्री एरे करंट कंट्री एरे एलिमेंट मैचेस द कंट्री बीइंग सर्च, के मैच कर रहे हैं कि नहीं बिटवीन द लाइन नंबर 12 and 13। If it does, allow output in the line number 13. If it does not match the next element, फिर जाए वो खुद ही सही। तो ये आपको अंग्रेजी में स्टेप्स लिखने थे। I'll just take the screenshot for this.
come back to this. Coming to this. हम जो बात कर रहे हैं कुछ इस तरह की कर रहे हैं कि हमारे पास सिटीज हैं, सिटी के नाम से, सिटीज के नाम से, सिटी के नाम से एरे है। इसका कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, और आपकी कन्वीनियंस के लिए लिख देता हूँ कि इसमें सिटी नेम है, इसमें कंट्री नेम है, और 1 से शुरू होके इसमें टोटल हमारे पास 50 नेम्स है। एग्जामिनर ने हमें प्रोग्राम सीडो कोड बनाने को कहा तो नहीं है, मगर हम बना लेते हैं। हमें देखना है कि इस प्रोग्राम में यहाँ लाइन नंबर 11 एंड 12 के दरमियान में इधर यहाँ पे क्या चेंजेस आप करोगे। ये चेंजेस हम मतलब एडिशन आएगा, कुछ और लाइंस मजीद इसमें ऐड कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, सर्चिंग का प्रोग्राम ऐड कर रहे हैं। तो पहले आउटपुट के आपको ढूंढना क्या है, आउटपुट और इंटर कंट्री, फिर आपने करना है इनपुट सर्च कंट्री, और फिर आप इसको यहां से ढूंढना शुरू करोगे। पहले से जो सर्च कंट्री है, मान लेते हैं सर्च कंट्री आपने दी है यूएस, और यहाँ पे कंट्री लिखा हुआ है यूके, यहाँ लिखा है स्पेन, यहाँ लिखा है इंडिया, यहाँ लिखा है पाकिस्तान, फिर यहाँ जाके लिखा हुआ है यूएस। ये क्या करे, हमें करना क्या है, हमें पहले इसको जाना है, यहाँ ढूंढना है, मैच करना है इसके साथ। सर्च कंट्री को मैच कर रहे हैं हम, इस वाले सर्च कंट्री को, इसको मैं येलो कर देता हूँ ताकि पता लगे हम इसको ढूंढ रहे हैं। इस येलो वाले को यहाँ मैच करें, आर दीज टू सेम, नो। फिर हम नेक्स्ट से मैच करें, आर दीज टू सेम, नो। इससे मैच करें और सेम, नो। इससे मैच करें, फिर इससे मैच करें, और जब मिल जाए तो इसके सिटी प्रिंट करें। अब इसमें तो और भी ज्यादा हो सकते हैं, 6 7 पे भी हो सकते हैं, बहुत सारे यूएस हो सकते हैं। तो जितने भी इसको यूएस मिले आगे, उन सारे यूएस के, इसको एलए है, न्यूयॉर्क है, सही है, और उसके बाद कैलिफोर्निया है, डैलस है, तो जितने भी है वो सब प्रिंट करें। यस, ये काम करना है हमें। तो हमें इसकी सर्चिंग करनी है, ऊपर से शुरू करना है मैच करना, और ऊपर से इसको मैच करते हुए नीचे तक लेके जाना है, लाइक दैट, 50 तक। सही है, तो इसके लिए एक लूप लगाएंगे फॉर काउंट। ऊपर वेरिएबल तो ऑलरेडी था हमारे प्रोग्राम में काउंट का, इसको हम कर लेते हैं 1 2 50। 50 तक जाना है हमने, और इफ की कमांड लगाओ, सर्च करो सर्च कंट्री। इसको आप सर्च कंट्री पहले लिखो या सर्च कंट्री बाद में भी लिख सकते हैं। फिर एरे बताओ क्या है, एरे है सिटी। सिटी के अंदर, ओ सिटी के अंदर आपको बताना है काउंट। रॉ पहले लिखते हैं, काउंट सेकंड कॉलम में ढूंढना है, इसलिए 2 लिखा मैंने। और इसको आपने मैच करना है, क्या ये है बराबर सर्च कंट्री के। अगर ऐसा है देन व्हाट, अगर मिल जाए फाउंड, तो मिल जाने पर ये प्रिंट करे उसके सिटी। सिटी कैसे प्रिंट करेगा, सिटी बोलो, आउटपुट output, सिटी ब्रैकेट काउंट कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज, सिटी प्रिंट कर दे। और अगर कंट्री भी साथ साथ प्रिंट करा, अब वो भी प्रिंट करा सकते हो, कॉपी कर लो, 2 कर लो, तो सिटी एंड कंट्री दोनों प्रिंट करेगा मिल जाने पर। और नहीं है तो फिर आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट, नेक्स्ट काउंट। ये लाइंस, ये वाली लाइंस ऐड होनी चाहिए कहां पर, यहां पर, इस जगह पर।
11 एंड 12 के दरमियान। बात समझ आ गई है? जी सर। ओके, लेट मी गिव यू दिस screenshot. अब अगर आप एग्जामिनर के पॉइंट्स देखोगे ना तो आपको आसानी से समझ आएगा। ये पॉइंट एग्जामिनर के थे और ये हमारा सोल्यूशन था। पहला पॉइंट ये कह रहा है एड एन इनपुट, तो हमने इनपुट किया, ये ढूंढना क्या है। प्रॉम्प्ट द यूजर टू आस्क फॉर द कंट्री टू बी सर्च। बिटवीन लाइन एंड 11 में हमने लिखना है। फिर एक लूप चलाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, इस कमांड के साथ सर्चिंग करनी पड़ेगी। अगर मैच कर जाए तो हमें आउटपुट करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत सिंपल से स्टेप्स है। ये इसका शुरू हो रहा है। आई होप नो प्रॉब्लम नाउ। No, sir. Okay, moving to the next question. Explain how variable and constant should be used when creating and running a program. Constants should never change the program. Examiner is not asking about what are constant. Uh, when you talk about variables and constant, you should start with that you give them proper names. Do not use variable or constant like XYZ. For example, in this program, if we go back and check, uh, this array name, city is fine, acceptable, count is acceptable, out. This variable, I think, could have been changed, could have been a better variable, but I would still say our examiner has used sensible variables there. He is not using XYZ, otherwise this becomes too confusing. You cannot identify what kind of data is stored in them if you keep the variables like that. First point. Second, when you use meaningful variables, so what happens? You understand them easily and use them everywhere in the program. Let's read the question again. Describe the changes you should make to the corrected algorithm to allow the name, not this one, this one. Explain how the variable and constant should be used when creating and running the program. So, meaningful variable makes it easier to understand, easier to make modification, easier to debug. Both can be stored, can be declared. Constant, never change. During the execution of the program, variables can be keep on changing. All the calculations, all the values in which increment, decrements are done should be defined in the variable. Okay, Okay. got it? No Yeah. problem? जी सर। Okay. So just have to explain only. Examiner is not talking about that you write them down. And you're not only writing down the point that why variables are used or why constant are used, meaning how are they used. So you have the program, so you can define them all on the top. Constant is to be used, that will not be changed throughout the program. Variables, if it is a variable, it is a variable, suppose. So why do we use variable in our program? For all type of calculation results, increment decrements are done in the variable, as they can be keep on changing. Moving to the next question. The flowchart, how was it? It was like this. The flowchart represents an algorithm that performs a process on group of values that are input. The algorithm will fail if the first value of any group is 0. So program is taking group of values. Whenever the value is 0, this will end.
total count, inputting value, checking the value if it is zero. If it is zero, it will come out, will give you average. Whatever total was calculated up till now, will take the total divided by count and then will give you total and average. Otherwise, if the value is -1, it will stop. So whenever the number is zero, the first group will complete that and will give you average. I will give you total. I will go back and restart the next group. Whenever you enter -1, it will stop then and there. The entire program is going to be stopped when you enter -1. Otherwise, it will be keep on calculating total and keep on counting. Do you understand? Yes. जी सर So if I enter the number 3, then enter 4, then enter 5, then enter 0. So that means when I enter 3, it will run till the end. I will come back. Similarly, when I enter 4, it will run till the end and will go back. Similarly, when I enter 5, it will run this whole thing, will go back. But when I enter 0, when I input 0, so it's going to come here, the 0 condition will check, and then it will say yes, it will calculate the total, it will give you average, and then we'll go back there. We'll go back there and we'll restart the program. That means this was the first group of numbers that you have entered. Now you start second group of numbers, and second group of number can be any number that you input like 51, 61, 78, and then 4, and then you are writing 0. So it will give you total average when you enter the number 0. But if you enter -1, so it's going to come out. So you can enter group of numbers there. That's what examiner is saying on the next page, that run this program flowchart using this set of numbers. So what do you think what will happen? I think you can judge that directly also. First group will end here because 0 is entering. And then it's going to give you a total of these and divide them by 3. And then the second group will end here. So would come, Values -1 won't be then counted because -1 will end. uh, -1 will end. It's not going to take the rest of the numbers. So you just have to fill this flowchart, this trace table. And when you fill up this trace table, remove the values that I've cut. This was the group 1 values. These are the group 1 values. You entered 0. So giving you average. It was doing the counting also, was calculating the result also. How many number were these? This was number 1, number 2, number 3. That is why the count is 3. So it's going to divide this total by 3. I will give you average here. And then showing you output, showing you average. First group completed. Now taking the entries again for the second group. And second group is starting from 57, 20, 25, 18. And then when it would reach to the number 0, it's going to produce result. See, second group is completing here. 0 came, and then at the number 0, producing all results again, all over again. And then when the number is -1, not doing anything, just coming out of the program, not doing anything. So all other numbers that the examiner has given you are not going to be dealt. Got it? Hello? yes, sir. Ready? जी सर And all other? जी सर आ रहे बाकी के लोग भी हैं, लोग तो और भी है यार, खामोश क्यों बैठे हैं? स्वेद भी है। स्वेद बेटा समझ आ गया है? जी सर आगे। ओके, डिस्क्राइब द पर्पस। क्या क्या रहा है पर्पस बताओ। तो पर्पस ये है कि एवरेज कैलकुलेट कर रहा है, टोटल एंड एवरेज दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, और फिर 0 इंटर हो रहा है तो एग्जिट कर रहा है। 0 से ग्रुप चेंज हो रहा है। ग्रुप का मतलब है बैच। सो 0 जब आ रहा है तो ग्रुप चेंज हो रहा है। ये ग्रुप 1 हो गया, फिर 0 आ गया तो फिर ग्रुप 2 हो गया, फिर 0 आ गया तो फिर ग्रुप 3 में गया, मगर ग्रुप 3 में उसको डायरेक्ट -1 मिल गया तो बाहर आ गया। तो ये वो लास्ट पॉइंट है, कह रहा है कि 0 इंटर होने पे क्या हो रहा है, बैच के रिजल्ट्स आ रहे हैं। आई होप यू गॉट दैट। Yes, sir. Can we also write if a negative number is entered, then the program will stop? Yes, you can write that too. That will be the next point, MP4. -1 to end.
Uh, Now it says the string operation substring quote start number returns a string from quote beginning at position start that is number characters long. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर इसमें पाकिस्तान है कोड के अंदर पहले से स्ट्रिंग में होगा ये, और आपने कहा थ्री, फिर आपने कहा थ्री, तो इसका मतलब है या आपने कहा थ्री की जगह फोर कर लेते हैं, थर्ड पोजीशन से फोर, तो वन टू, थर्ड पोजीशन है के से चार लेटर इंक्लूडिंग के, वन टू थ्री फोर, तो ये आपको देगा रिजल्ट केस्ट। अब इसको दोबारा पढ़ते हैं। स्ट्रिंग ऑपरेशन होने जा रहा है, एक स्ट्रिंग से कुछ निकाल रहे हैं आप, तो स्ट्रिंग ऑपरेशन होने जा रहा है। फंक्शन यूज होगा सब स्ट्रिंग, जो कि रिटर्न करेगा, रिटर्न अ स्ट्रिंग, इसका रिजल्ट भी एक स्ट्रिंग होगा। फ्रॉम कोर्ट, कोर्ट के अंदर से, कोर्ट में पाकिस्तान, कोर्ट के अंदर से बिगिन कर रहा है कहां से? स्टार्ट की पोजीशन से, जो कि थ्री है, थर्ड पोजीशन से स्टार्ट करेगा। कितने करेक्टर्स आगे जाएगा? लॉन्ग फोर करेक्टर्स आगे जाएगा। तो फर्स्ट करेक्टर इन द कोड इज इन एट पोजीशन नंबर वन। कहता है इसकी जो पहली पोजीशन है ये वन से शुरू हो रही है, जीरो से नहीं। पहली पोजीशन वन से शुरू है, पाइथन लैंग्वेज में ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है। अब आपने सब समझ लिया। बोलता है राइट प्रूफ स्यूडो कोड स्टेटमेंट स्टोर द स्ट्रिंग लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइन इन कोड। आपने पहले इसको कोड में स्टोर करना है। चलिए जी, बताइए क्या लिखूं, बताइए क्या लिखूं उसके लिए। पहला स्टेप सॉल्व करें। You all are quiet. स्ट्रिंग स्टोर कराना है, ये पूरा स्ट्रिंग। बोलो ना यार, कोड लिख के सर। Learning never exhausts the mind equals to quote. वेरी गुड, ये हो गया। उसके बाद ये कह रहा है इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है डिस्प्ले द वर्ड द माइंड फ्रॉम द स्ट्रिंग। इसमें से द माइंड निकाल के लाना है आपको। हम सब स्ट्रिंग अब इस्तेमाल करते हैं। अब थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। अगर हमारे पास ये है और ये कौन सी पोजीशन पे है, 20 पे है या 18 पे है, मुझे चार उठा द माइंड लेकर आना है, तो द माइंड आठ उठा के लाने हैं। कैसे लाने हैं? यहाँ तो ये मैं एक्सेल में कर रहा हूँ, अभी आपको समझा देता हूँ। हमें सिर्फ सब एसटीआर करना पड़ेगा। मिड, इसके मिड से लाना है 18 पोजीशन से 8 करेक्टर्स लाने, उठा के ले आए। ये नहीं चाहिए हमें, हमें द माइंड चाहिए। तो कहाँ से लाए? 24 से 8, 9। 31. Is it right? Is it wrong? What is it? It's right. Up now, what is the change that you'll have to make? We are not going to do this, obviously. हम सब स्ट्रिंग इस्तेमाल करेंगे। What was that formula written there? Substring. Instead of mid, substring. Quote. What was the position? Position number 24 and 9. Store it where? Store it in new string. A new variable. And then what? There is one more thing that examiner wanted there. And display the mind. We'll have to display also the output new string, and then output the original string in lowercase, output
What was that for lowercase? L case? Lowercase bracket quote. Bracket quote. It's better that you always keep an eye onto the functions to be used. This was not lower, this was L case. So we have used the right function. I've given you this screenshot before also. You should go according to the syllabus. This page is very important. Keep on revising it. Look, look what examiner says there. This is what examiner has done. Learning never exhausts the mind. Examiner says start from 25, pick up 8 letters. How come? One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, space 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, and 25. Yeah, examiner is right. 25. 25. And then how many? 8 letters. Why? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Here we go. 25 to 8. What was here? Learning never exhausts the mind. Can be a spelling issue. Learning never exhausts the mind. If I say 8, giving me what? 25 and 8. 25 and 8. Oh, yeah, that's right. Yeah, you know what was giving me result before? Because we wrote down the number 24, and 24 is the place of this space. So we were picking up, previously we were picking up this data, including this space. Examiner doesn't want this space. Examiner want from the mind. Got it? But Yes. anyways, coming back to the solution was correct. 24 to 25 to 8, we should say. This was the problem that was taking a space before. Let me give you a screenshot of this as well. Right, so how many questions are left now? Why the programmer would use procedures and parameters when writing a program? What are procedures? A big program can be broken down into smaller procedure that does not return any data, but we can always apply parameter while calling a procedure. So if you're calling this, so over here you can say call some, and you can send data there, a comma b. You can send the parameter from main program to the procedure. You can supply that. That's what examiner says. You can use procedures and parameters. So you can, why do we use parameters? Because you supply data from main program to this, to the procedure.
To enable the program to write collection of programming, so you got module 1, module 2, module 3. You can say small program or subroutine or module or procedure. So you have multiple program, multiple small program, which become easier for you to write, debug, test, understand. So there are a number of benefits that you get, and you can always reuse them. So under a single identifier, meaning what? If this procedure is sum, so under this single name, you got hundreds of lines in it. So using a single identifier, meaning this one single name has many lines. So it's a modular program that you are creating, allow procedure to write. You can, program creation would be faster, and procedure can be reused. And you can, this enables the programmer to use different procedures in the same project. So if you got three different procedures. What if your procedure number two is the kind of procedure that you might need in other projects also? Because you got different client. Client number one requested you to design something, then client number two wanted you to design something to client number three also. You're designing different projects. You're working on different project at the same time given by different client, and you feel that this was the procedure that for saving something. This was to save, so for example, and save is a common thing. You needed that in different project, so you don't need to rewrite. You can always reuse it. Make program size smaller, easier to maintain, and this way you can. This will be more convenient for you. Got it? Yes. Sir, in procedures, do you have to write call? You have to write what? Do you have to write call? In procedure, call is not necessary. Is not necessary. You can write it directly also. But when you use a function, remember, I better explain you that here. Uh, you're calling a procedure sum and you're saying 2 comma 3 like that. You can also write, or you can write sum 2 comma 3. But when you're calling a function, supposingly it is a function, not a procedure, then what would you do? Then it is must that you go on the left hand side, extreme left hand side. Either you write output or you use a variable here, or you use a variable here. Why? Because it's going to bring some result. Function always produces some result, so result should take place in a variable, and it comes back to the same line, comes back to the same line from where it was called. And this one comes back to the next line. Got it? अगर इस लाइन से आपने कॉल किया था, ये वापस जब आएगा तो नेक्स्ट लाइन पे आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा डॉट पे. ये जब वापस आएगा तो सेम लाइन पे वापस आएगा जहाँ कॉल किया था, उसी पे वापस आएगा. मतलब ये कॉल करेगा, कॉल करने के बाद इसी लाइन पे आएगा तो रिजल्ट स्टोर करेगा. गॉट इट? Yes. Okay. I think we should continue this in the next class because there's a lot to cover. So अभी अपना कितना रह गया है? वो है प्रोग्रामर, ये तो हो गया. फिर एक लॉजिक का क्वेश्चन है, एंड देन फिर एक डेटाबेस का क्वेश्चन है, एंड देन फिर एक डेटाबेस के क्वेश्चन के बाद फिर एक ये क्वेश्चन है, जो ये हम पहले कर चुके हैं, वुड फ्लोरिंग वाला क्वेश्चन. वी हैव डन दैट बिफोर, बट चलो दोबारा से कर लेंगे, दैट्स नॉट एन इश्यू. तो विल कीप इट फॉर द नेक्स्ट क्लास. ओके. Okay. जी सर. सो हमने कितना किया है अभी, ये मैं आपको ग्रुप पे भेज देता हूँ. हम लोग कर रहे हैं, वी डूइंग दिस पेपर, जस्ट सेकंड, 2 November 23. We have done till question number 8.
Chalo, take good care of yourself, guys. Goodbye.